malls, etc. It has been an all-round development in the scenario, with technology also coming up, with internet, the markets opening up, people traveling throughout the world have seen how consumption happens. And on top of that, the ease of living has also improved, the standard of consumption has increased. The way people are earning money and spending money has all led to the growth in retail. पहले हम लोग साल में हो सकता है 1 या 2 बार नए कपड़े खरीदते थे जब फेस्टिवल आता था. अभी हम जब चाहें तब जाकर के नए कपड़े खरीद लेते हैं, नया कलेक्शन देखते हैं, फॉल विंटर स्प्रिंग समर, उस टाइम जाकर के खरीद लेते हैं. ऐसा नहीं है कि मेरे को दिवाली पे ही खरीदना है तो मैं साल भर वेट करूंगा. Even when I was in Reebok, the average consumption of a sport shoe used to be, one sport shoe in 2 years' time. Today, every person, I believe, on an average has 4 to 5 pairs of shoes with him. So that is how consumption has increased, which has led to the development of retail. Okay, but because I cannot just resist that recalling those days. हम दोनों नए थे. And Sumit used to say, एक काम करो, Puma का जूता ले लो, और कोई ऊपर नीचे आ जाए मैं replace करा दूंगा, चिंता मत करो. So that was the kind of selling he was doing. I still remember those days. And at that time I was dealing with this international trading. So मैं दिल्ली में था, ये भी दिल्ली में था, तो उसका ये था, सबको बोलता था हमारे पूरे बैच में, Puma ले लो, खराब हो जाए रिप्लेस करा दूं. परेशानी नहीं करवाता था, करवा भी देता. Because he was actually talking me out of purchasing a Lido, that Lotto Lido. So I remember those days. So that is how it all started. So, how overall, what's your view about the industry as such? ये अपना mic बंद करिए जो भी बोल रहा है. कीर्ति mic बंद करो. Okay, thank you. So how has been, I mean, industry overall, how is it happening? Because a lot has been happening in last 20-30 years. As you said, when we started. So agar proper retail ya chamak damak keh lo, to shayad it was only in tier 1 cities. And there were brands like in Mumbai, say like Benzer, like Akbar Ali's, even that Chiragdeen, they were supposed to be department store, the ultimate thing. Suddenly everything has changed. Abhi we see national brands, national chains, things happening here and there. And on top of it, the pandemic happened, and then that online retail happened, platform providers, aggregators. I mean, how you would not only survive but rise in the ranks, and how did you deal it? Because we are a generation which actually is spoken truthfully. We have seemed to have seen it all. It started with when radios have licenses, and we are here when we are talking on Zoom. So how is overall industry grown, or what's your understanding? Each of the industries you have been in, and then an overall view, Indian perspective. See, I will tell you, one of the turning points for retail was the malls. Yeah. Which happened sometimes late 90s, the malls started coming up. See, to do a good retail, the industry needs, number one, good real estate space. Yes. Which was provided by the malls, number one. Number two, a place where the consumers can shop at their own convenience, which again was provided by the malls. Good retailers, be it national or be it international, they always need a good environment. See, what is you can change?
You can change your products, you can change your people, but you cannot change the place from where you are doing business. Yes, that was the challenge with the brick and mortar thing. Absolutely. Yeah. So with the advent of malls, the retailers got the opportunity to place their product in the space provided by the malls, as a result of which they were able to market their brands to the consumers, and in turn, the consumers also felt very, very convenient and easy to shop. Yeah. पहले क्या होता था कि कांच के कबर्ड के अंदर कीप करके कपड़े रखे होते थे। वो बोलता था अच्छा मेरे को वो वाला लाल दिखा दीजिए या मुझे काला डिजाइन दिखाइए, वो निकाल के दिखाता था। अभी कंज्यूमर के पास खुद चॉइस था, कंज्यूमर ही डिसीजन लेता है और अपने चॉइस के हिसाब से शॉपिंग करता है। अभी भी मैं आपको बताऊंगा, there are premium, I am in luxury segments. Yeah. LVMH, the biggest luxury company in the world, वो अपनी दुकानें इंडिया में अभी भी नहीं खोल पा रहे हैं, बिकॉज वो बोल रहे हैं कि हमारे लायक कोई यहाँ पे रिटेल स्पेस है ही नहीं। लुई वुइटन की दुकानें खोल नहीं पा रहे हैं। Not even in Mumbai, Delhi. है भी नहीं more of है, अगर थोड़ा बहुत जैसे सेंट माइकल्स के मैंने देखा था ग्रेट इंडिया मॉल में, भगवान जाने चल रहा है कि बंद हो गया है, बहुत पहले की बात थी। सेक्टर 18 या 8 कौन सा है नोएडा में? लग्जरी सेगमेंट typically because I have been last time we had Vijendra Singh, he is a brand retail head of high design. उससे भी मैंने ये चीज पूछी थी कि यार you somehow manage, but दुनिया के जो बड़े-बड़े ब्रांड हैं, they somehow could not, and why go far? Look at these Reliance Freshers, these more mega stores. अब उसकी तो बात क्या करें हम, उसकी वॉलमार्ट की, वो तो बेचारा निकल ही गया। जो एक बहुत हाइप था ना, I remember say around 15 years back, when we were at the mid time of at the fag end of my career and even at the mid time of your career, so उसमें ये था कि एकदम से आएगा छा जाएगा। I remember I was with these my FM people and ये आए थे हमारे बियानी साहब, किशोर बियानी in जयपुर। तब उसमें मैंने पूछा था कि क्या है, तो उस समय बड़ी हम तो मतलब छा जाएंगे, खत्म कर देंगे। What actually happened? What is this resilience in Indian retail? ये सवाल है मेरे दिमाग में सुबह। I will not say it is a resilience in Indian retail. See, consumers are the same everywhere. Okay. Yes, the society is a little different. This used to be the point earlier. Now, with the advent of technology, internet, world has become one place. आप चाहे इंडिया में हैं, चाहे यूएस में हैं, चाहे आप यूरोप में हैं, आपको हर जगह कंटेंट आपको अवेलेबल है। प्लस आदमी आजकल ट्रैवल कर रहा है, उसको पता है कि दुबई में लेटेस्ट स्टाइल का क्या चीज मिल रहा है, उसको वो इंडिया में भी अगर मिलता है तो इंडिया में खरीद सकता है। ओके। सो अभी वो सब चीजें चेंज हो रही हैं, कंज्यूमर परसेप्शन भी चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी क्रिकेट है, जैसे क्रिकेट में देयर आर 3 फॉर्मेट्स, वन इज टेस्ट क्रिकेट, वन इज वनडे क्रिकेट, वन इज T20। ओके, अभी मान लो 10 में से 10 लोगों को क्रिकेट पसंद है, बट उन 10 में से 5 जनों को वनडे क्रिकेट पसंद है, 4 जनों को T20 पसंद है और खाली 1 जने को टेस्ट क्रिकेट पसंद है। तो अभी चैलेंज ये है कि आपको किस तरह से, आपको क्या कम्युनिकेट करके मार्केट करना है, क्रिकेट को कैसे मार्केट करना है और किसको मार्केट करना है। पसंद सबको है, so it all depends on what kind of consumers are you targeting, उनको क्या पसंद है। Why I am doing business is very important today rather than what business I am doing. Yeah, absolutely, very good point, very good point. Yes. Absolutely. So one should know that why I am doing this business. For example, now Apple भी कंप्यूटर बनाता है और HP भी कंप्यूटर बनाता है, बट Apple अपने को कंप्यूटर कंपनी नहीं बोलता है। They are saying that I am making your life easy, I am making a professional smarter and faster,
Not unlike HP, which says that it has got an Intel chip inside and this and that. आपको पता है पहले जब Apple नहीं आया था, कंप्यूटर का जो कवर होता है उसमें HP का लोगो अगर आप खोलोगे ना, आजकल तो सब HP का लोगो सीधा दिखता है, पहले वो उल्टे दिखते थे, क्योंकि जब कंप्यूटर बंद होता था सीधा लोगो कंप्यूटर के लैपटॉप के ओनर को दिखना चाहिए, उन्होंने उस हिसाब से डिजाइन किया. True. So now what is important is why I am doing business is more important than what business I am doing. That thing has shifted. And that is what I call retail. Yeah, true, absolutely true. Okay, so this is what has happened, and add on the other, don't you think that education and overall, if you say the affluence which has been increasing, and the second thing is that I think that part of my question again remains unanswered, that that is okay, a lot of awareness is there. But how comes that we are able to actually withstand some companies, Indian companies, homegrown companies? For example, look at Ola. Uber को टिकने नहीं दिया इसने, सारी जोर लगा लिया उसने अपना, पर वो Ola retained its market share and supremacy. There are many such companies. They are homegrown, they are startups, they are new ideas. Somehow they did not allow the big names in retail to actually enter India. So is it just because of the world has become smaller or internet is there? I think it is, Siddharth, it is a matter of time. This is what I feel. Because now the brands have proliferated everywhere. Everywhere. Brand advocacy is there with every child. Okay. आप देखो, अगर आज के डेट में हम लोग तो कभी ब्रांड और ये सब जानते भी नहीं थे. Today everybody is aware about brands. Yeah, true. Everybody, and they identify why brands, because with brands they identify certain emotional connects. Yeah. वो बहुत जरूरी है. अभी इंडियन ब्रांड हो चाहे फॉरेन का ब्रांड हो, अगर वो इमोशनली कनेक्ट कर लेते हैं लोग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिजनेस करने. Okay, so the second part of thing, but because don't you think that still, regardless of whatever we are talking about, there was certain things there that maybe the foreign big brand did not do it right. For example, look at the automakers. Even look at these, the durable makers. Higher they've been trying their guts out. I don't know what sort of success they are actually getting, but Mitsubishi has already made inroads as far as the AC is concerned. जहाँ पे खाली वोल्टास या फिर ये जनरल इलेक्ट्रिक और यही नाम हुआ करते थे. Suddenly we see these Mitsubishis and Hitachis coming in. So they have come up there. Isn't it a complete, you can say, control on the distribution channel, which makes them so strong and which actually withstand the onslaught of these brands coming from outside? You are right in that sense, but जब कोई भी मैच या कंपटीशन होता है वो छोटे टाइम के लिए नहीं होता है. Yes. You need to have the endurance for that. सही बात है, क्योंकि end of the day and what is important today is the trust in your brand for the consumers. True. अगर ट्रस्ट आपके ब्रांड में नहीं है, आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लें, आप उसको सक्सीड नहीं करा पाएंगे. नहीं कर पाएंगे. सही बात, एब्सोल्युटली करेक्ट. कभी भी नहीं करा पाएंगे. सही. Okay, so now let's come to the second part of this talk. What were the skills you picked up across the way as a salesperson, as a you can say you can territory in charge, then say a zonal in charge, then a regional, then a national in charge. What were the skills you picked up along the way while becoming a very seasoned retail professional? If I can ask you, give me 2-3 skills which actually you picked up as a retail guy. One is understanding consumers and giving them service at the right time. Okay. That is very important. Okay. Second is to understand
how we can improve or increase the consumption. Especially when I was in sales. Okay. The point was on how to increase the consumption. Okay. Okay. And how did you manage that? Now consumption अगर बढ़ाना है, मैंने आपको बताया क्या, मल्टीपल बिजनेस, मल्टीपल सेल करना. आजकल जैसे रिटेल में बहुत बड़ी टेक्नोलॉजीज होती है, यूज करते हैं. बास्केट साइज, बास्केट साइज क्या क्यों आदमी देखता है या सोचता है या सुनता है या मेजर करता है? Because the size of the basket tells you the consumption. Yes, obviously, basket size, ticket size सही है. So ये सब चीजें जब ऑर्गेनाइज रिटेल आई तो ये सब मेट्रिक्स डिफाइन होने लगी. अभी मैं आपको ऑप्टिक्स में ही बताता हूँ. ऑप्टिक्स में इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट 1% शुड हैव मोर देन वन स्पेक्टिकल विद इट. ये हम हर कस्टमर को समझाते हैं. Why? स्पेक्टिकल एक ऐसी चीज है कि अगर आपका पावर ठीक नहीं है और स्पेक्टिकल आप अगर नहीं पहनते हो, थोड़े टाइम के लिए भी आपको दिक्कत आ सकती है. ओके. स्पेक्टिकल बहुत कॉमन चीज है कि टूट जाता है या गुम भी हो जाता है. ये तो हम दैट इज नंबर 1. दैट इज अ नीड बेस्ड एक्टिविटी. देन ओके, आप मल्टीपल कंजम्पशन, मल्टीपल सेल्स कैसे करते हो? और आप उसको ओकेजन्स बताते हो. कि आप सुबह तो ऑफिस में जाते हो, शाम को पार्टी में जाना है तो आप चश्मा दूसरा पहनिए या जूता दूसरा पहनिए या कपड़े चेंज करिए. तो इस तरीके से कंजम्पशन बढ़ता है जब आप नीड्स को वांट में कन्वर्ट करते हो. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. बिकॉज वो मेरे साथ भी होता है कि वन पोर्टेबल मेरी जेब में, लेंस कार्ड का वो छोटा वाला, एक स्पेयर में, और एक आई एम कैरिंग विद माय बैग, क्योंकि बैठ के काम करना. That is because I only need this for reading. People who need it for all the time, वो भी 2 तो कैरी करते हैं, एक स्पेयर में. नहीं, मान लो फॉर एग्जांपल आपको किसी शादी में जाना है. या आप शादी में तो फोल्डेबल ग्लास पहनोगे नहीं, घर वाली नहीं. घर वाली भी ग्लास भी नहीं पहनोगे, तो आपको तो ग्लास चाहिए जो अच्छा दिखे. बरोबर. सो इसी तरह से अभी कंजम्पशन बढ़ने लगा है. ओके. कंजम्पशन क्यों पहले जैसे मैंने आपको अभी during the beginning of my talk I told you कि पहले हमारे पास ओकेजन होता था दिवाली या दशहरा. आजकल तो जब हम चाहें ओकेजन बन जाता है. आजकल तो 2 अक्टूबर में ही छोड़ते हैं यार. Exactly. Absolutely. Exactly. Because they have a Independence Day sale, they have a Republic Day sale, they have a this sale or that sale. Yes, many occasions are being artificially created for that. Yes, absolutely. So consumption basically, yeah, that is all part of organized retail. Yes, and so basically upselling, rather cross-selling, upselling, along with converting to needs into the consumption. So okay, so why are we doing all these things? I think your team should understand. The team का problem क्या है? अभी youngsters है, freshers है, second sem वाले. हाँ. इनको आपको थोड़ा खोल के बताना पड़ेगा कि नीड्स को वर्ड में कवर कैसे करते हैं. What is the skill involved in doing that? Let us go deeper into it. Yeah. Okay, sure. So see, one is that I'll tell my example. In our business, everybody who needs a correction in his eyes, vision correction, needs a spectacle. Okay. Now, how do you change that into want? Siddharth, give me 1 minute. 1 minute. Sure. Something wrong with Zoom today. I don't know what it is. Sorry, I'm back. Well, I am back. Arnold Schwarzenegger, Terminator. I am back. Okay. Chalo. So, need is that I need a spectacle. Want is I need a spectacle for marriage. Okay. Wants को need में कैसे करो convert? And or I need a branded spectacle of this particular brand. Okay. Which is again my want. Or I want
a frame of this particular design. Okay, but change it into need, na? With a want, I want to be, I want that, I should become Bill Gates. Eyewear में need is very simple. अगर मेरी आंखें खराब हैं, या मैं टीवी या मोबाइल के सामने ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ ऑनलाइन क्लासेस में, तो मेरे को स्पेक्टिकल चाहिए। वो हमारे तो हमें इसका एसएलआर का क्यों चाहिए? एसएलआर का क्यों चाहिए? अब आप आ जाओ, वही मैं बता रहा था आपको वांट में। एसएलआर क्यों चाहिए वांट में? बिकॉज नंबर 1, इसकी क्वालिटी अच्छी है। नंबर 2, ये ब्रांड है तो मैं इस पे ट्रस्ट करता हूं। नंबर 3, ये मैं अगर खरीदूंगा आई विल हैव वैल्यू फॉर मनी। ओके ओके, द सेकंड क्वेश्चन, ये तो ठीक है, वेरी गुड, फाइन, बहुत बढ़िया, इट्स ऑल अंडरस्टूड. Online, your presence does not seem to be matching your biggest competition. How you are managing it? देखो, as I told you, we are into luxury segments. Okay. There is a difference between buying and experiencing. Okay. Okay. So you stick to that physical retail and then actually evolve it into experiential retail. Very, very important. If you don't experience, you will never be able to buy. आपको मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। ये वॉशिंग पाउडर बनाती है कंपनीज। एक कंपनी ने ऐड निकाली, My washing powder has ingredients which makes your clothes whiter and brighter. Okay. Correct? Okay. बहुत एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च किया, उन्होंने कहा कि हमारी सेल एकदम बढ़ जाएगी। लेकिन उनकी सेल बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। बिल्कुल भी उनकी सेल नहीं बढ़ी। उन्होंने रिसर्च किया कि आपको ये कैसे, क्या देखते हो जब आप कपड़े धो लेते हो कि ये साफ हुए या नहीं हुए। कस्टमर ने बोला कि जब हमारे कपड़े धुल जाते हैं वॉशिंग मशीन से, हम उसको निकालते हैं और सूखते हैं, स्मेल करते हैं, उसमें अगर फ्रेशनेस आती है, इसका मतलब हमारे कपड़े साफ हो गए। क्या बात सही है। आप बताओ कितने लोग कंपेयर करते हैं कि हाँ मैंने ये कपड़ा धो लिया, मैं दूसरे कपड़े से कंपेयर करता हूँ, ये सफेद हुआ। You're absolutely correct. ये hedonistic pleasure है ना, इसका कोई जवाब नहीं। So this is called experience. हाँ, इसको लॉजिक, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये बस है something hedonic. Experience, सिद्धार्थ, इसको बोलते हैं experience. नहीं, मैं जैसे इनको देखता हूँ कई बार कि नॉर्मली एक तो दूसरी चीज क्या होती है, समथिंग you can say, मतलब it has to be part of that particular community too. When I ask and I talk to these students and all that, so अभी क्या करेंगे मेजर, क्या most of them have an iPhone or a MacBook, they purchase their clothes from H&M क्योंकि वही available, इससे बड़ा ब्रांड है नहीं इंदौर में, things like that. It's something which is across the board, it is universal. अब if you go to the finer nitty gritty कि यार वो फैब्रिक कैसा है, स्टिच कैसा है, और तेरा आईफोन तो जब रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाता है, इसमें पर्पस ज्यादा आएगा तो ऊपर सबसे, उससे मतलब नहीं है। बात मुद्दे की क्या, हाँ, वो टोटल हेडोनिस्टिक, नो रेशनल एट ऑल। एंड यस, टू प्ले विद दैट, यस, दैट इज द गेम व्हाट इज ब्रांडिंग ऑल अबाउट। आई टोटली एग्री विद दैट, क्योंकि वो रिटेल ब्रांडिंग सब्जेक्ट भी पढ़ा था वो मैं। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, इंदौर में ही अभी एक नया मॉल आ रहा है, फिनिक्स सिटाडेल करके। ओके, तो आपने खोल दिया अपना वहाँ पे? हम अपने अभी मॉल नहीं खुला है, इट्स अ प्रीमियम मॉल एंड वी विल बी ओपनिंग अ स्टोर देयर। तो आओगे इनॉग्रेट करने? हाँ आएंगे ना, हमारे आना पड़ेगा। बिल्कुल आएंगे। बहुत बढ़िया, great. Okay, so that was the two. Okay, then looking at the retail scenario, looking at what is happening, forget the competition, but looking at the omni-channel being the buzzword, and I don't think it's going to be a fad. It is going to long, मतलब pandemic ने इतना तो सिखा दिया कि बहुत सारी चीजें कम खर्चा करके ऑनलाइन हो सकती है। ये भी सही कि बहुत सारी चीजें ऑनलाइन नहीं भी हो सकती, as far as experiential retail is concerned. What do you advise these young minds कि अभी what are the things they should actually work on? Because our model is 70% practical and skills. We make them do it.
अभी जैसा आई टुक देम फॉर इंडस्ट्रियल टूर, 2 डिफरेंट इंडस्ट्री थी, मैंने कहा ठीक है यहाँ पे मार्केटिंग का ऑफिस नहीं, बट सी हाउ इट इज मैन्युफैक्चर्ड. नंबर 1, कंपटीशन में तुमको you actually have an upper hand on competition. Then secondly, you can convince your customers much better because you've seen the ins and out what is happening. Plus you know the supply chain and logistic, the upstream side. तो ये 3 चीजें तुमको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है whenever you are going to face your customer, whether it's a B2B customer or B2C. तो इस तरह का हमारे इसी पे भी गिव अ प्रोजेक्ट जैसे अभी ये हो रहा है, तो whatever we talk about it, they will actually submit an analytical report. It's like that. So this is how things actually work, right? So what sort of skills you would actually propose कि कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, और how they should actually देखो, नंबर 1 एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है योर बिलीफ. okay. Why I am saying this? Because if you don't believe in what you are doing, you will never be able to do what you want to do. For example, let us take an example of a car. Okay. Now, vehicle you can't buy online. Okay. Okay. But online does not mean that you have to sell. Okay. In online, apart from your brick and mortar, you can deliver a lot of content, lot of information to the consumer for him to understand your product, your deliverables, your services. That is also part of 360-degree omni-channel business. Okay. There are a lot of products where you sell in brick and mortar as well as you sell in online. Yeah. But in omni-channel, what you do, आप कस्टमर को बोलते हैं, आप समझिए कि आपको एक डेस्टिनेशन में जाना है और डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं. कस्टमर डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए कोई भी रास्ता पकड़ सकता है और वो डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा. सही से. That is what omni-channel is all about. That is what omni-channel is. बरोबर. So जरूरी नहीं है कि ई-कॉमर्स का मतलब सेल करना ही है. Yeah. Oh, that's what we teach them. How e-business is different from e-commerce. E-commerce, correct. Yeah. So there are a lot of products, lot of services where you can't do business or can't monetize it. Yes. But yes, you have to be present because today delivering the content. आजकल क्या है ना, advocacy in terms of reviews, advocacy in terms of content has increased so much. But it is also. I'm sorry I'm interrupting. Legitimacy खत्म हो गई. There are most of them people think they are purchased. तो आज का जनरेशन है जैसे वो अपने माँ बाप से नहीं पूछेगा कि ये फोन कैसा है. वो इंटरनेट में जाके इंस्टाग्राम देखेगा या फिर न्यूज़ देखेगा और फिर वो डिसाइड करेगा कि कौन खरीदना है. बरोबर. वो इन्फ्लुएंसर्स कल्चर चल गया आज के. Anybody and everybody is an influencer, provided it should be something 20 something. Correct. And it should be wacky like anything. Absolutely. So that, yes, but then maybe we like it, we don't like it, but then that is what sells. So use तो अपने को भी करना ही पड़ता है उसको भी. True. So okay, so first of all the belief in yourself, right? What you said, and a flexibility in all the channels. ये चीजें अभी से रखे. Don't create any preconceived notions as far as when you land into the market. And I think this generation of students जिसमें से काफी सारे ऐसे जिनको 1-2 साल तो कोविड की कृपा से प्रमोशन भी मिल गया है. So I think they understand it better about flexibility and what things might actually become. Okay, great. Okay, so attitude जो मैं बोल रहा था ना, attitude बहुत जरूरी है. अगर आप सिद्धार्थ अपने स्टूडेंट्स को स्किल्स वगैरह सब सिखा दोगे या फिर इंडस्ट्रियल टूर में चले जाएंगे या समर ट्रेनिंग कर लेंगे, इंटर्नशिप कर लेंगे, स्किल्स सीखेंगे, बट अगर एटीट्यूड ठीक नहीं होगा ना, वो सब बेकार हो जाएगा. बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट.
वही You ना, can't teach attitude. You Yes. can't teach attitude. yes, एटीट्यूड होगा तो सब सीख जाएंगे, बिकॉज देयर इज अ Correct. लर्निंग एटीट्यूड, देयर इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड. वो ट्रेनिंग्स में बहुत बार ये सब यू नो अबाउट इट, ट्रेनिंग्स में बहुत बार ये ज्ञानबाजी करी हुई है. होता है, बट ये फैक्ट है. ये सबसे बड़ी बात ये है कि आप कितने भी टैलेंटेड हो, अनलेस यू हैव दैट एटीट्यूड. इसीलिए हैव अ बिलीफ इन योरसेल्फ एंड हैव अ एटीट्यूड टू सक्सीड, एंड देयर इज never late for anything to restart or actually refurbish or rebuild, because Absolutely. we at this age keep on doing it. So इनके लिए तो बहुत ही अच्छा है. Okay, I think we can open the forum for questions. Any questions? There should be certain questions, unless you all are sleeping. Yes, please tell me. Any questions? What do you want Please. to ask? Anybody? Yeah, sir, Diwakar here. हाँ बोल दिवाकर. Sir, you told that some things that cannot be sold online. Like, for example, you said a car. Okay, but why can't we sell a car online? Why can't, sir? No, I am not saying that you can't sell it. But the point is this: you need to weigh whether you want to sell a car online or you want to deliver information which will help you to sell a car. That is what you need to decide. No, sir, like for when I want to buy a car, what do I see? I see engine, comfortable in driving, design, because materialistic goods. So all these goods can be sold online also now. But you want to go and drive, right? You want to Yes, experience. Without experience, you can't decide whether I want to buy this car or not. So whatever information you need, you can get online. But if you want to experience before buying the car, you need to go to a showroom and buy it, right? Yes, sir. Test drive लेगा That भाई. is what I'm saying. So that is what I'm saying. Test drive आप जैसे आज के डेट में आपको मान लो ब्रेड का टोस्टर खरीदना है, अब सीधा आप तो जाते हो टोस्टर बाई बटन में क्लिक करते हो और खरीद लेते हो. आप नहीं कार सर, खरीदने के मर्सिडीज तो मेरे को पता है ना सर, मर्सिडीज ले रहा हूँ तो ड्राइविंग में कंफर्टेबिलिटी तो रहेगी. बिल्कुल होगा, बट फिर भी आप एक्सपीरियंस करना चाहोगे, नहीं तो आप नहीं खरीदोगे. See, there Okay, one more sir. thing I'd like to add on Diwakar on that, just on the same line. See, what actually is happening, मैं एक बार पर डिस्कशन भी हुआ था, to have this onslaught of online. ऑनलाइन में आप वही चीजें खरीदोगे दो चीजों में, या तो दे आर जस्ट कन्वीनियंस गुड्स, ये ठीक है चलता है. आप वही खरीदोगे जिनसे आपकी काफी हद तक फैमिलियरिटी होगी. You have already experienced them, and that experiential part is not that important because it is something routine. So routine purchases happen very well on online. But if it's something exclusive, तो कोई नई गाड़ी, अगर तुम धंधा सेठ हो, तुम्हारे पास 2-4 मर्सिडीज खड़ी है, तुम चला सके हो, yes you can buy online, eBay पे बिकती है. But अगर if you, for example, I'm upgrading say from my Chevrolet to something better, so I'll just like to drive it. Before that, I cannot actually make a decision. I think that is what Mr. Datta's point is trying to make. Maybe, you know what you are saying, maybe after a few years it may happen. If we get some 10D technology, where sitting at home, when you are clicking a buy button, you are able to experience the entire comfort of driving a Mercedes. Simulation तो कर ही सकते हैं ना, जैसे हवाई जहाज का करते हैं. और क्या होता है ना यार. Driving school तक तो आ ही गया. It could be car specific. I'll give you a very good example, which is a practical example. You know, in our store, normally जब चश्मा कोई आदमी पहनता है तो मिरर के सामने देखता है अपना चेहरा या अपना पूरा शरीर, करेक्ट? तो हमने एक स्टोर में मिरर हटा दिए. अच्छा, हटा दिए. फिर क्या हुआ? और उसके जगह हमने वो जो वेब कैम वाले कैमरा होते हैं और नीचे एक टीवी का स्क्रीन लगा दिया. तो कैमरा ऑन होता है, टीवी में वो अपना चेहरा देखता है. Customer was not comfortable because we are so used to seeing ourselves in a mirror. So mental जो हमारा brain है, that also plays a very big role
in what kind of buying decisions you are making. There will be people who will buy a car online, no doubt about it. I am not saying that. You can buy anything online if you want to. But the point is, what does your brain tell you? That is important. उसको ही समझना चाहिए. Okay. Any other question? Sir, one more time, sir. Sir, you said that GBK Opticals, your optical company, only has luxurious products. You target the luxurious segment. So, sir, do you focus on only profit maximization? See, any business has to earn profits. Okay. So that is part of business. Absolutely, sir. Okay. नहीं तो आप business नहीं करोगे, फिर आप charity का काम करोगे. Yes, sir. कोई भी business होता है, एक industry में कोई भी company अगर रहती है, उसको अपने आप को एक position करना होता है. Positioning सुना है आपने? Yes, sir. पढ़ाई Yes, होगा sir. आप लोगों ने. Yes, sir. Positioning very important. तो हम लोग top of the pyramid हैं. और हम लोग टॉप डाउन अप्रोच लेते हैं जब भी हम कुछ भी काम करते हैं. ऐसा नहीं है कि हमारी स्टोर्स में हम लोग सस्ता चश्मा नहीं बेचते हैं. हमारे चश्मे 1800 रुपए से स्टार्ट होते हैं. हमारा जो कम्युनिकेशन है, जो पोजीशनिंग है, वो टॉप एंड पे. हम लोग पहले प्रीमियम सेगमेंट HNI कस्टमर्स को टारगेट करते हैं and then we go down. There are many companies who take a bottom down approach also. They position themselves at the bottom and try to move up. हम लोग we are positioned ourselves at the top and we try to move down. That's it. And sir, according to you, who is your main competitor, sir? Our main competitors in our segment is Himalaya, Lawrence and Mayo, and there are certain local opticians as well. Like for example, in Delhi there is Dayal, in Bombay there is Gangar Optics, in Ahmedabad there is R. Kumar Opticals. Okay, sir. Thank you, sir. Welcome, welcome. Okay, next question, please. सर हिमांशु है सर. बोलो. सर जैसे आपने बताया कि जो आप की कंपनी है वो टॉप डाउन अप्रोच यूज करे, प्रीमियम सेगमेंट को कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू यू, अगर आज कोई एंटरप्रेन्योर है और कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, कोई भी प्रोडक्ट, नॉट इन मतलब ऑप्टिकल्स नहीं, कोई भी प्रोडक्ट, तो उसको टॉप बॉटम जाना चाहिए कि बॉटम टू टॉप जाना चाहिए, क्या होना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है. ये डिपेंड करता है कि आपको कौन से सेगमेंट में प्ले करना है. टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, दोनों अप्रोचेस ठीक है. इसमें कोई ये अच्छा है या ये बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है. यस सर. Cannot generalize it. कहने का मतलब you cannot generalize it. Okay. यस सर. थैंक यू सर. Okay. Right. Any other questions? You can ask question. जितने भी क्वेश्चन पूछने पूछ सकते हो. Anybody else? और कोई? सर मुझे पूछना है एक क्वेश्चन. Yeah, sure. सर प्रांशु अग्रवाल यार. एंड सर मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना था. सपोज करिए कि अभी आप कोई एक नेचुरल या जो होता है ना अभी हर्बल वगैरह जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में आप जा रहे हैं, अभी बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है सर, उसमें अभी हिमालय वगैरह सब गुस्से में है. अगर हम कुछ ऑथेंटिक चीज चालू करना चाहते हैं, उसको मार्केटिंग कैसे करें और उसको बेसिक लेवल तक कस्टमर से कैसे पहुंचाएं? मतलब अभी मुझे पता नहीं कौन मेरा कस्टमर हो सकता है, कैसे पता करूं और कैसे पहुंचाऊं, एंड कॉस्ट इफेक्टिव वे में सर, मतलब बजट कम हो तो.
प्रोडक्ट क्या है? देखो, सर अभी जैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को हेयर की प्रॉब्लम है। हेयर फॉल हो गया या डैंड्रफ हो गया या स्कैल्प इन्फेक्शन वगैरह हो गया, सब चीजें। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारी ऑथेंटिक अभी भी चीजें होती है जो है हमारे मतलब आयुर्वेद वगैरह में, एंड देन हम लोग वो चीज प्रोवाइड कर सकते हैं जो अभी कोई भी कर ही नहीं रहा है। मतलब अभी किसी ने उसमें हाथ ही नहीं डाला है, तो कैसे कर सकते हैं उस चीज को? अगर करना चाहे स्टार्ट, कैसे करेंगे मार्केटिंग वगैरह सब चीजें? देखो, ये बहुत सबसे जनरल क्वेश्चन है, कैन यू बी मोर स्पेसिफिक? सर जैसे कि और भी इसमें चीजें हो गई आयुर्वेद की, जो भी बॉडी केयर से रिलेटेड है। एंड देन सर अभी जैसे आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कम बजट, आप कैसे अपने कस्टमर्स ढूंढेंगे, पोटेंशियल कस्टमर्स, और उनके तक कैसे पहुंचेंगे? मतलब क्या फिर रिटेल के पर्सपेक्टिव से जानना चाहते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव से? सर रिटेल भी और दोनों से? डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही एज अ ठीक होल। है, ये सब पूछ लेगा आपसे सुमित, आज बताओ। बिजनेस प्लान तैयार कर लेगा पूछ के तुमसे, बताओ। सबसे पहले तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू दिस बिजनेस? सर ये बिजनेस में अभी कोई घुसा ही नहीं है, और अगर सर कोई प्लेयर है ही नहीं तो पूरा नहीं मार्केट ही नहीं खाली है। नहीं, घुसा नहीं है करके नहीं, आई एम नॉट, आई नो दैट, यू नो वो गैप है। व्हाट इज, व्हाई डू यू वांट टू डू दिस बिजनेस? इस बिजनेस में ऐसा क्या है? व्हाट इज योर यूएसपी? व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू दिस बिजनेस? आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट बिफोर आई कैन आंसर यू अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चंस। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर ये मुझे अभी नीड पता चल रही है कि बहुत बेसिक सी नीड है ये अभी। एंड सर अभी शायद एमएनसीज वगैरह ये सब पे इस पे ध्यान नहीं दे रही है, ये शायद उन लोग को इतना लग नहीं रहा है। बट सर मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत जनरल सी प्रॉब्लम है, क्योंकि आई क्या बिलोंग प्रॉब्लम है? टू। ये क्या प्रॉब्लम है? सर जैसे कि अभी आप दिख रहे हैं, आप लोग को हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग की 50-50 प्लस है। बट सर ये जनरली अभी से लोगों को हो रही है। एंड सर क्योंकि शैम्पू यूज कर रहे हैं बचपन से हम लोग, सोप्स जो यूज कर रहे हैं उससे स्किन प्रॉब्लम्स वगैरह सब चीज हो रही है। तो ये सब चीज पे अभी तक कोई ने मतलब सर ध्यान नहीं किया है, पूरा तो आप खाली क्या है। सोल्यूशन देना चाहते हो? सर ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है हमारे आयुर्वेद में या जनरल टेक्निक्स है जो सर इसका ऑथेंटिक सॉल्यूशन है। एंड सर चीजें वर्क करती है, हम लोग इसको कर तो सकते हैं। आपको अपना यूएसपी पहले देखना पड़ेगा, प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है। कभी भी कोई चीज मार्केट करते हो, आप मार्केटिंग में कम्युनिकेट करते हो, राइट? सो आपको अपना प्रोडक्ट का यूएसपी सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट का ये यूएसपी है। जब आपने ये यूएसपी डिफाइन कर लिया है, उसके बाद ही आप अपना मार्केटिंग कम्युनिकेशन का प्लान बना सकते हो। मैं अभी मीडिया और उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, बिकॉज़ दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पॉइंट ये है दैट योर यूएसपी of doing business of your product has to be very, very clear. If that is clear, then you will be able to market your product. See, Pranjul, we often talk of differentiator. That is exactly what Sumit means by that. कि एक बात बताओ, अनूप तेल से लेकर सनी ऑयल से डाबर ब्राह्मी आंवला से लेकर डॉक्टर बत्रा तक सारे बालों के झड़ने का और ज्यादा बाल आने का इलाज कर रहे हैं। आप ऐसा क्या नया, आपके प्रोडक्ट का क्या ऐसा यूएसपी होगा जिसकी वजह से पहली बात आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सको? एक आपने जनरल प्रॉब्लम बताई, तो अनलेस यू गो टू दैट निटी-ग्रिटी एंड डिटेल इट आउट, और जब तक दैट इज नॉट, यू आर नॉट कन्विंस्ड, पहला स्टेप वही है, उसके बाद ही तुम्हारी बाकी सारी प्लानिंग स्टार्ट होगी। आई होप दिस इज व्हाट यू वांटेड टू कन्वे सुमित, इफ आई Yes. एग्जैक्टली। सर जैसे आपने डाबर और हिमालय वगैरह का लिया, सर उनमें सर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं जो कि उसको 1-1 साल 2-2 साल तक डैमेज नहीं होने देते हैं। बट सर जो प्रिजर्वेटिव्स है वही तो खराब होते हैं, जैसे कि शैम्पूज है उसमें सल्फेट यूज होता है। और एक और कौन सा सर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है सर, ये सब चीज यूज होती है प्रिजर्वेटिव ऐसा। और मतलब जो उनकी यूएसपी वही होते हैं। बट सर वही उन्हीं की सर सबसे बड़ा जो हार्मफुल चीज है वो है अभी शायद बहुत लोगों को पता है, मतलब पहले नहीं पता, पैराबीन और सल्फेट बहुत मतलब गलत चीज होती है। अब जो हिमालय और डाबर है सर उसका यूएसपी जरूर है, वो मतलब वो प्रिजर्वेटिव होता है उसमें, मतलब कि वो 2-2 साल तक रहते हैं। बट सर वो कहीं ना कहीं हमारे बालों को, हमारी हेल्थ को, स्किन को ओवरऑल डैमेज कर ही रहे हैं। जो कि सर एज अ आम आदमी के मतलब हमको पता रहता है कि सर ये सब चीजें हमारे पास हो रही है, बट हमारे पास कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। सर जो सॉल्यूशन है, तो इसलिए तो बोल मामा रहे अर्थ हैं करके एक ब्रांड है जो प्ले कर रहा है सर, जो
पैराबेन फ्री और सल्फेट फ्री प्ले करता है सारे प्रोडक्ट्स में. मामा अर्थ करके एक स्टार्टअप है वो, एंड दैट इज डूइंग प्रीटी गुड इन दिस फील्ड. ले भाई जरा ने जवाब दे दिया, तेरा आपस में आ गया तेरा जवाब. सर काउंटर है जॉनसन्स में भी शैम्पू सर, भी है सर जो सल्फेट फ्री होता है, सर और बहुत सारे लोग बोलते हैं वो भी यूज कर सकते हैं बड़े लोग. अच्छा एक मिनट, आई जस्ट इंटरवीन. सो सीधा मतलब है तुम्हारा यूएसपी एक ही हो सकता है, ऑथेंटिकली नेचुरल विदाउट sir. एनी प्रिजर्वेटिव्स. ठीक है, yes sir. so you can, that is your answer. Start building on that. Any other Yes, sir. questions? Or I think Sumit, I hope you're not getting late. No, I think let them ask questions. We will take one or two questions more and then we will wrap it up. Anybody else? Sure. Or koi? Nothing from the lady managers of the future? Hi, this is Kirti Makhija. Hi, Kirti. And so, sir, I am planning to start a women's clothing brand and a premium women's clothing brand. So I have pitched this idea to multiple people, to get feedback and suggestions. So many of them said that I should not go for a premium brand directly because it is a startup and I have no experience in the field. So what would you like to comment on that? Premium clothing brand means what? I mean, when you will be competing with which brands? Is it ethnic wear? No, she is not coming up with a brand. She is coming up with a premium store. She will carry out all the premium brands in the women's wear segment. Store. Ji, Premium store. Ji. I want to start a chain store with my first store in Indore. I'm starting a brand basically. Okay. You starting a brand? Yes, Brand of it what? will A be. clothing brand or a chain of stores brand? I'm sorry? Store का brand कि कपड़े का brand? Store. Store का brand. ठीक है, we understood it Yes. correctly. So basically, a store which has all the premium brands, starting from Biba going upwards. So my simple question to you is, you are perceiving it as a premium brand, right? Yes. How do you know that the customers will also perceive it as a premium brand? Sir, the prices. Will you be, no. Prices, you please, when you are talking about premium, please keep prices in the back seat as of now. Okay. Experience. My point is, will your store be the #1 store in Indore? You are planning to open it where? In Indore? Vijayanagar. Yes, in Indore. Yes. Will it be the #1 store there? Be it in terms of store looks, be it in terms of your merchandise, be it in terms of your people, be it in terms of your customer service and experience, will it be #1? Yes, sir, that's the plan. Now, if you make your store #1, not only in terms of your product and whatever you are saying, pricing, you don't, I mean, if it's premium pricing, it takes a backseat as of now. In terms of looks, will it be a destination? Yes, sir, it will be. If the consumers perceive it, I'm not saying you should perceive. Consumers must perceive it to be a destination store. Then yes, there is no harm in opening a premium outlet, but that is a niche market, yes, but it requires a lot of effort. And consumer perception is very, very important here. Like you told me that I want to open a premium store or I want to open it. That's very good. That is your thought. But what if the consumer doesn't perceive it as a premium store? Just 1 minute, 1 minute. Yeah, I'm back, sir. Yeah.
Hello. I think you got the idea, Kriti. Yes, sir. Thank you, sir. Effort would be multiplied as per the stakes and as per the expectations, or as far as the projections go. That is what Sumit actually wants to say. देखो अब अगर आप प्रीमियम स्टोर मल्टी ब्रांड खोलना चाहते हो, आप कैसे? Yes, sir. Multi-brand. मल्टी ब्रांड. तो आपको वो परसेप्शन लाने के लिए ब्रांड्स के साथ टाई अप करने पड़ेंगे, इवेंट्स करनी पड़ेगी. ये नहीं है कि आप इमीडिएटली सक्सेस हो जाओगे. आप में पेशेंस होना बहुत जरूरी है. कस्टमर का परसेप्शन बनाना एक बहुत बड़ा काम होता है, जिसमें मार्केटिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है. Right, sir. Thank you, sir. Okay. Welcome. So anything else, so we can wrap it up now? I think we should wrap it up now. Kafi time bhi ho raha hai. Shraddha, please do the honors. Yes, First sir. of all, let me express it was after a very long time we met, and that too we met virtually. But then again, regardless of our love for experiential thing, this experience also at least is much better than not meeting for 10 years. So that's so that is it. Shraddha, all yours. The mic is all yours. Thank you, sir, for your time and presence. And I hope Welcome. this association with you continues in the future. And thank you, Sure. everybody, for your presence in time. Thank you very much.